Okay, today I'm going to explain chapter 1, relations and functions. To begin with, first of all, you should know that what is a relation. Relation is always defined from one set to another set. So suppose relation is defined from A to B, and the general form of the relation is R is equal to X comma Y such that X belongs to A and Y belongs to B. Now I'll give you an example. Suppose the set A has 3 elements, 1, 2, 3, and set B has 3 elements, 2, 4, 6. Then the relation from A to B can be written as 1, 2, 2, 4, 4, 6, 2, 6, 3, 4. These all can be the part of the relation. So basically, relation from one set to another set is defined as X, Y, such that X belongs to A and Y belongs to B. Now, this set is called the domain of the relation, and this set B is called the codomain of the relation. Now, I'll tell you about this X and Y. If we talk about X, what is X? So we can say X is the domain of the given relation, and all the values of Y is the range of the given relation. So if in this relation, I ask you, what is the domain of this relation? So about domain, you will say 1, 2, 4, and 3. This is the domain of this relation. And what is the range of this relation? All the values that Y can take is the range. So that is 2, 4, 6. This is the range of this relation. Now we will study about the nature of relations. Or simply we can say the type of relations. There are 3 types of relations. First is reflexive. Second is symmetric. And third is transitive. So in detail, first we'll study about the reflexive relation. Suppose a relation R is defined from A to B, then R is said to be reflective. R is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A that belongs to A. So a relation R from A to B is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A that belongs to A. तो basically इसमें हमें करना क्या है? अगर एक relation हमें बोला check करो reflexive है कि नहीं. What we need to do is we need to see all the elements which are present in A. All the elements in A should have their doublet present in the relation itself, and then we can say that the relation is reflexive. For example, suppose I have a set A which is 1, 2, 3, 4, and the relation is defined on A. The relation is defined on A means R is defined from A to A. It means all the X can take their value from A, all the Y can take their value from A. So suppose I define 2 relations. The first relation is 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4. And suppose the second relation is 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 4, 2, 2. And the question is check whether these 2 relations are reflexive or not. So what we need to see is that all the elements which are present in A, in this set, the domain set, all the elements which are present in the domain set, we have to check whether their doublets are present in the relation itself or not. If they are present, we'll say that it is reflexive. If they are not present, we'll say it is not reflexive. So I can see that 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. They all are there in R. So this relation is reflexive. But in the second relation, I can see that only 1, 1 and 2, 2 are there.
but 3, 3 and 4, 4, both are absent in the relation. So I can say that this is not reflexive. Now, how do we write? How do we write that in first case, the relation is reflexive? So I'll say that since A comma A belongs to R for all A that are the elements of A, therefore our given relation is reflexive. And in the second, we will say 1, 1, 2, 2 are present, but 3, 3 and 4, 4 are not present. So we'll just give an example. Since 3 comma 3 does not belong to A, therefore it is not reflexive. So what we need to consider is that if we want to prove that a relation is not reflexive, we have to give an example. And if we want to prove that a relation is reflexive, we have to write the proof general. In general, we have to write down the proof that since A comma A belongs to R for all A, we just have to write the definition of reflexive. That since the given relation is satisfying the definition of reflexive, therefore it is reflexive. So this was about the reflexive relations. Now there is a formula for reflexive relations. And the formula is, let R be a relation on A and let A has n elements. Then number of reflexive relations. Number of reflexive relations is given by the formula 2 to the power n into n minus 1. Now this question is not there in NCERT, but this is asked in the board exams. That you will be given a set. Suppose a set A has 3 elements and you will be asked that how many reflexive relations are possible on A. Now since the set A has 3 elements, so number of reflexive relations possible are 2 raised to the power 3 into 2, which is 2 raised to the power 6, which is 64. So there are 64 relations on A which are reflexive. So this is a very important topic. Number of reflexive relations. Now we'll move to the symmetric part. Symmetric relation. So let R be a relation from A to B, then R is said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A also belong to R. So if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R, then we say that the relation R is symmetric. Now I'll give you an example. Suppose set A is 1, 2 and set B is AB. Then what kind of element does the relation can have from A to B? All the X will be picked from A, all the Y will be picked from B. So the relation can have the elements of the form 1 comma A, 2 comma B, 2 comma A, and so on. Right? Now, in order to explain the symmetric part, I'll give you an example. Suppose the relation is defined from A to B as R is equal to 1 comma 2, 1 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 2, 2 comma 1, 3 comma 3. Suppose the set A is 1, 2, 3 and the suppose B set B is also 1, 2, 3. Now the question is, we need to check first, we need to check the reflexive part. So reflexive part says that we have to just check this domain set. This domain set is 1, 2, 3. All the doublets of this set, that is 1, 1, 2, 2, 3, 3. If they're present in the relation, it is reflexive. So 1, 1, 2, 2, 3, 3. They are present in the relation. So we will say this relation is reflexive. So how we are going to write it? Since A comma A belongs to R for all A that belongs to A, therefore the relation R is reflexive. Now we'll come to the symmetric part. सिमेट्रिक ये बोलता है कि सिमेट्रिक के लिए आपको सेट ए नहीं चेक करना, सिमेट्रिक के लिए यू हैव टू चेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर. जितने भी एलिमेंट्स आर में है अगर उनका उल्टा भी
रिलेशन में प्रेजेंट है, देन वी विल से दैट इट इज सिमेट्रिक. सो पहले हम देखते हैं 1,2. 1,2 का उल्टा होता है 2,1. सो दैट इज प्रेजेंट इन द रिलेशन. अब सिमेट्रिक के लिए आपको डबलेट्स चेक करने की जरूरत नहीं है. डबलेट्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑन बोथ एट बोथ द पोजीशंस. 1 1 2 2 3 3 चेक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका उल्टा भी सेम ही होगा. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट 2,3. 2,3 का उल्टा होता है 3,2. दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिलेशन. नाउ नथिंग इज लेफ्ट. ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन कवर्ड एंड सबका जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन सबका जो उल्टा है दैट इज प्रेजेंट इन द रिलेशन. सो वी विल से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. जब एक चीज सिमेट्रिक होती है वी हैव टू राइट इट जनरली, और जब एक वो चीज नहीं होती है देन वी हैव टू गिव एन एग्जांपल. तो यहाँ पे दिस इज सिमेट्रिक, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन. सो वी कैन से दैट since we can see that if a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R. Therefore, the relation R is symmetric. जब एक रिलेशन जब भी कोई चीज कुछ होती है, we need to write it generally. We need to write just the definition to say that this definition is getting satisfied by the relation. Therefore, it is symmetric. And whenever it is not symmetric, we have to give an example. Now, I'm going to give you another example. Suppose a relation R is defined from A to B. A has the element 1, 2, 3 and B has the element 2, 3. Suppose the relation is defined as 1, 2, 2, 3, 3, 2. Suppose this is your relation. So what we need to check is 1, 2. 1, 2 ka ulta 2, 1. That is not present in the relation. So this relation is not symmetric. So not symmetric hai, so we have to give an example. So we will write since 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belong to R. Therefore, this relation is not symmetric. So this relation is not symmetric. Now we'll move to the third type of relation, which is transitive. अब transitive का क्या definition है? अच्छा, before covering transitive, I'll give you the formula for number of symmetric relations. The way I have given you the formula for number of reflexive relations. So the formula for number of symmetric relation is 2 raised to the power n into n plus 1 divided by 2. So I'll give you an example. Let R be a relation on A. A has 4 elements. So the value of n will be 4 because A has 4 elements. So if the question is find the number of symmetric relations, the number of symmetric relation is 2 raised to the power n plus 1 by 4, which is 2 raised to the power 4 into 5, upon 2. So the answer is 2 raised to the power 10. So if the set A has 4 elements, there are 2 raised to the power 10 relations which are symmetric on A. Now this part is also not given in the NCERT, but it is asked in the board exam. Now next we'll move to transitive relations. Transitive. So the definition of the transitive relation is let R from A to B be a relation, then it is said to be transitive. It is said to be transitive if A, B, B, C belongs to R implies A, C also belongs to R. If this condition is satisfied, then we say that the relation is transitive. Now I'll give you 3 examples and we'll discuss all the parts, which is reflexive, symmetric, transitive. First of all, 3 parts we'll discuss the transitivity. So let the set A be 1, 2, 3 and let R be a relation on A defined as R is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3,
2, 3, 3, 3, 1. Suppose this is the relation. Now, if I want to check the transitivity, what you need to do is ignore the doublets. Why? Because on doublets, relation will be transitive by default. So when we are checking for the transitivity, you can ignore your doublets. Now we have seen, now we can see 1, 2. अब 1, 2 है तो search for 2, something. 1, 2 है 2, something ये रहा. तो 1, 2, 2, 3. This is A, B, B, C. ये दोनों R में है. अब हमें A, C चेक करना है. A, C क्या होगा? 1, 3. Now we need to see, is 1, 3 present in the relation? Yes, it is present. तो we'll move to next condition. हमें कब तक चेक करते रहना है? जब तक सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो जाएंगे. और जब हमने देखा कि हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए और सारे एलिमेंट्स पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, then we'll write that this is transitive by writing down the basic definition of transitivity. अब 1, 2 हमने चेक कर लिया, 2, समथिंग और कहीं है? नहीं है, तो ये एलिमेंट हमने चेक कर लिया. अब हम 2, 3 पे आते हैं. 2, 3 है, 3, समथिंग ढूंढो. 3, समथिंग ये रहा. तो आई कैन सी 2, 3 है, 3, 1 है. A, B है, B, C है. These two elements are in R, but A, C. अब A, C in this case is 2, 1. Is 2, 1 present in the question? No, it is not present in the question. So हमने एक ऐसा pair of elements ढूंढ लिया जिसमें A, B, B, C ये दोनों R में है, but जो A, C है that is not in R. So this relation is not transitive. So what we need to do is, when we need to check for the transitivity, ignore all the doublets. After ignoring the doublets, एक element पे you have to move. और ऐसा नहीं कि पहले element पे transitivity आ गई, जैसे हमारे पहले केस में आ गई थी तो हम बोल दें it is transitive. नहीं, आपने 1, 2 चेक कर लिया था, अब आप नेक्स्ट पे मूव करो, 2, 3 पे मूव करो, 3, समथिंग ढूंढो. अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आगे बढ़ो, उसको क्रॉस करके फिर हम आगे बढ़ते. हम 3, 1 पे मूव करते. 3, 1 आया तो हम 1, समथिंग ढूंढते और फिर देखते कि उसका A, C R में है कि नहीं. अगर सारे सेटिस्फाई हो जाते then we would have said that the relation is transitive. और अगर नहीं है तो हम एग्जांपल देके बोल देंगे कि it is not transitive. Now जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला बताया, वैसे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का देयर इज नो फॉर्मूला. कभी भी ये आए कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, वैसे तो कभी आया नहीं है. अगर बाय चांस आ जाता है तो आपको खुद लिख के कुछ रिलेशंस ऐसी बनानी पड़ती है. दैट विल कवर इन द मिसलेनियस पार्ट. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी. Exercise 1.1, question number 1, first part. The relation R is defined on the set A, which is equal to 1, 2, 3 up to so on 13, 14, and the relation is defined as x, y such that 3x minus y is 0. Now this relation is given in the set builder form. We have to convert it into the roster form first. Roster form का मतलब ये है कि हमें उसको elements लिखना है. x अपनी सारी वैल्यूज a से उठाएगा, y भी अपनी सारी वैल्यूज a से ही उठाएगा. मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक, y की वैल्यू 1 से लेके 14 तक. तो हम सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, हमें ये यूज करना है. तो we'll see अगर x की वैल्यू 1 है, if we put in this equation x as 1, we'll get y as 3. अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y 6 आ जाएगा, x को 3 पुट करते हैं तो y 9 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा. बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस एलिमेंट बिकॉज 15 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट. x अपनी सारी वैल्यूज a से उठा रहा है, y भी अपनी सारी वैल्यूज a से उठा रहा है. तो ये हमारी रिलेशन बन गया. अब इसमें हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि A में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके डबलेट्स R में होने चाहिए. तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 up to so on 14, 14 should be present in the question, which is not there. We can see किसी का भी डबलेट नहीं है. तो जब नहीं है एक एग्जाम्पल दो. तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि 1, 1 does not belong to R, therefore the relation is not reflexive.
Now we'll come to the symmetric part. Now symmetric says कि आपको डबलेट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स देखने हैं. अगर सबके एलिमेंट्स का उल्टा रिलेशन में ही प्रेजेंट है तो रिलेशन सिमेट्रिक है. नाउ आई कैन सी 1,3. हम we'll start with the first element 1,3, but 3,1 is not there. So this relation is not symmetric. So we'll give an example. 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belong to R. Therefore, the relation is not symmetric. Now we'll move to the next part, which is transitive. ट्रांजिटिव क्या कह रहा है? आपको A, B और B, C ढूंढना है. डबलेट्स को छोड़ के बाकी सब पे चेक करो. 1,3 है. अब 3, समथिंग ढूंढो. 3, समथिंग ये रहा. तो अगर मैं 1,3 ले रही हूँ और 3,9 ले रही हूँ तो ये A है, ये B है, ये B है, ये C है. तो ये दोनों तो R में है. But if I check A, C is 1,9. I can clearly see that that is not present in R. Therefore, my given relation is not transitive. So this is how we are going to check the symmetric, reflexive, and transitive part. Now I'll tell you what is equivalence relation. Equivalence relation is if a relation is reflexive, symmetric, and transitive. अगर एक relation reflexive, symmetric, transitive तीनों है, then that relation is called the equivalence relation. If a relation is reflexive, symmetric, transitive, then that relation is called an equivalence relation. Now we'll move to the second question. R is defined in the set n of natural numbers. मतलब R is defined from n to n. मतलब x अपनी सारी values यहाँ से लेगा, y अपनी सारी values यहाँ से लेगा. That means x is a natural number, y is also a natural number. Now R is defined as x, y such that y is equal to x plus 5, x is less than 4. तो पहले तो हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं. x is less than 4 और x एक नेचुरल नंबर है. इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 1 to 3 हो सकती है. नाउ विल यूज दिस. x की वैल्यू 1 पे y 6, y की वैल्यू 2 पे x 7 और x की वैल्यू 3 पे y 8. सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में वी कैन क्लियरली सी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबके डबलेट आर में होने चाहिए. बट यहाँ पे तो नहीं है, 1 का ही डबलेट नहीं है. सो विल राइट 1,1 does not belong to R. Therefore, this relation is not reflexive. Next, we'll move to symmetric. एक एलिमेंट से स्टार्ट करो, डबलेट्स को छोड़ के कवर ऑल द एलिमेंट्स. 1,6 देखो, 1,6 का उल्टा 6,1 वो है नहीं रिलेशन में. So this is not symmetric. So we'll write 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R. Therefore, this relation is not symmetric. Now we'll move to next part, which is transitive. Transitive में मैंने क्या बोला था? डबलेट्स को छोड़ दो. डबलेट्स तो यहाँ है ही नहीं. अब 1,6 है. 1,6 से 6, समथिंग ढूंढो. 6, समथिंग तो यहाँ है ही नहीं. अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ. 2,7. 2,7 है. 7, समथिंग है ही नहीं. 3,8 है. 8, समथिंग है ही नहीं. ये एक एक्सेप्शन होता है जिसको कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी. मतलब कुछ चेक करने के लिए ही नहीं है. एंड व्हेन देयर इज नो कंडीशन टू चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, इन दैट केस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. व्हेन वी कैन नॉट फाइंड एनी एलिमेंट, मतलब हमारे पास बहुत सारे a, b है बट हमें b, c ही नहीं मिले. सो व्हेन देयर इज नो कंडीशन टू चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, then the relation is said to be transitive. So we will write when there is no condition to check for transitivity. When there is no condition to check for transitivity, then relation is transitive. यहाँ पे हमारे पास a, b थे बट b, समथिंग नहीं थे.
That's why the relation is transitive. Now we'll move to the third question. R is defined on the set A, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And it is defined as R is equal to x comma y such that y is divisible by x. y is divisible by x का मतलब है कि अगर हम y को x से डिवाइड करें तो वो पॉसिबल है, ये इसका मतलब है. अब r is defined on a, मतलब r is defined a to a अपनी सारी वैल्यू, x अपनी सारी वैल्यूज a से उठाएगा, y अपनी सारी वैल्यूज a से उठाएगा. मतलब x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यूज भी 1 2 3 4 5 6. तो रिलेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? अगर मैं 1 देखूं तो y अपॉन 1, ऐसी y की कौन कौन सी वैल्यू है जिनको 1 डिवाइड करता है? 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करता है, और 1 5 को भी और 6 को भी डिवाइड करता है. अब हम 2 पे आते हैं. y अपॉन 2. अब y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 2 किस किस को डिवाइड करता है? 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा. अब 3 पे आते हैं. 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, 5 सिर्फ 5 को करेगा, और 6 सिर्फ 6 को करेगा. So these are all the elements of the given relation. सबसे पहले we are going to check reflexive. Reflexive ये कहता है कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के डबलेट्स R में होने चाहिए. तो A में है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. These all elements should be present in R. तो I can see सारे एलिमेंट्स हैं. तो अब जब रिफ्लेक्सिव है तो हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम जेनरिक लिखेंगे कि सिंस a comma a belongs to R for all a that belongs to a, therefore our given relation is reflexive. Now we'll move to symmetric. Symmetric ये कहता है डबलेट्स को छोड़ दो, डबलेट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स देखो और देखो उनका उल्टा R में प्रेजेंट है कि नहीं. तो मैंने अगर 1 1 को लीव किया, आई मूव टू 1 2. अब 1 2 2 समथिंग ढूंढो. ये रहा 2 1 2 है 2, सॉरी वी आर नॉट चेकिंग फॉर ट्रांजिटिविटी, वी आर चेकिंग फॉर सिमेट्रिक. तो 1 2 है, 2 1, 2 1 is not present in the question, so this is not symmetric. So we will write since 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, therefore the relation R is not symmetric. Now we'll move to the third, which is transitive. अब transitive के लिए आपको क्या करना है? डबलेट्स को इग्नोर करो, सारे एलिमेंट्स को पकड़ो, a b और b समथिंग ढूंढो. तो 1 1 ये सारे डबलेट्स को तो मैंने अब इग्नोर कर दिया ट्रांजिटिविटी के लिए. 1 2 2 समथिंग ढूंढो. 1 2 ये रहा 2 6. 1 2 है, 2 6 है, इसका a c होगा 1 6 which is present. 1 3 3 6, इसका a c 1 6 present in the question. 1 4 4 समथिंग, डबलेट्स तो देखना ही नहीं है, तो है ही नहीं. 1 5 5 समथिंग है ही नहीं. 1 6 6 समथिंग है ही नहीं. अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. 2 4 4 समथिंग. अब 4 समथिंग में सिर्फ डबलेट है, डबलेट को हम इग्नोर करते हुए चलेंगे क्योंकि डबलेट पे वो ट्रांजिटिव होता ही होता है. डोंट वेस्ट योर टाइम, don't waste your time in checking the symmetric and the transitive part for doublet, because by default it is symmetric and transitive on doublets. तो 2 4 में 4 something ढूंढो, है ही नहीं. 2 6 में 6 something is not present. 3 6 6 something is not present. तो what we have seen is कि जहां जहां पे चेक हो सकता था वहां पे वो ट्रांजिटिव था, या तो कुछ आगे है ही नहीं एलिमेंट, a b और b c है ही नहीं है, या जिनके हैं उनका a c R में बिलोंग कर रहा है. हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल पाया. वी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल एग्जाम्पल जहां पे वो ट्रांजिटिव नहीं था. इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. और जब एक रिलेशन होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, हमें उसकी जेनेरिक डेफिनेशन लिख देनी होती है. सो वी विल राइट क्लियरली, we can see that if a b c belongs to R, then
A comma C also belong to R. Therefore, relation is transitive. I repeat, अगर reflexive, symmetric या transitive है, तो आपको examples नहीं देने कि देखो ये सारे examples हमने देखे, ये आपको सिर्फ mind में check करना. अगर वो reflexive, symmetric, transitive है, तो आपको बस basic definition लिख देनी होगी. तो since it was transitive, तो हम ये लिखेंगे कि clearly we can see that A, B, B, C जितने भी हमने देखे, उन सब के A, C R में हैं. Therefore, this relation is transitive. Now we'll move to the fourth part. Question number 1. Relation R is defined on Z. Z means integers. Z is integers. The relation R is defined on Z, and it is defined as R is equal to x comma y such that x minus y is integer. अब इसमें क्योंकि Z एक इनफाइनाइट सेट है, तो आप अगर इसके एलिमेंट्स लिखने बैठोगे तो सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट जाएंगे. जैसे 1 ले लिया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. सो सिंस दिस विल गिव यू एन इनफाइनाइट रिलेशन, so we are not going to write the elements of R. We are going to check it in a generic way. Reflexive अगर हम check करेंगे, we will consider A comma A. अब A minus A क्या होता है? A minus A is 0, which is an integer. So A minus A is equal to 0, which is an integer. Therefore, we can say A comma A belongs to R for all A that belongs to Z, and therefore our given relation is reflexive. Now we'll move to symmetric. Symmetric में हम लिखेंगे let A comma B belongs to R. This implies A minus B is an integer. अगर A comma B R को belong कर रहा है, तो वो R की relation को, R की जो उसकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब A माइनस बी इंटीजर है. अगर 2 एक इंटीजर होता है तो -2 भी एक इंटीजर होता है. तो अगर A माइनस बी एक इंटीजर है, दिस इंप्लाइज B माइनस A is also an integer, and therefore we can say B comma A also belongs to R, and therefore this relation is symmetric. Now we are going to see for transitivity. We are writing the proof like this just because this will be an infinite relation. Infinite relation में हम generic way में check करते हैं. So transitivity के लिए we will write let A comma B, B comma C belongs to R. इसका मतलब A minus B and B minus C both are integers. अब A comma C R को belong करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि A minus C भी integer है कि नहीं. How are we going to get A minus C? ये A minus B, B minus C, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास A minus C आ जाएगा. अब अगर 2 एक इंटीजर है और एक 3 इंटीजर है और दोनों को मैं ऐड करूं 2 + 3 5, वो भी एक इंटीजर ही होगा. So that is the reason अगर A minus B और B minus C दोनों integers हैं, this implies A minus B plus B minus C is an integer. B से B कट गया. This implies A minus C is an integer, and this implies A comma C belongs to R, and therefore relation R is transitive. I repeat, if we try to write down the elements of R, and if we see that all the elements of R are infinite, matlab it is not going to end. So this is the way we are going to check whether the relation is equivalent or not, by writing it in a general way. Now question 2 onwards we are going to cover in the next video.